Hello students, welcome to Real Academy. Today we are going to talk about linear equations in two variables. So why do we need linear equations in two variables? Sometimes there are two unknown quantities in the question that we need to solve. So we assume two variables and then we solve it. But there is a condition when we solve linear equations with two variables. Okay, we cannot solve a linear equation that has two variables if we don't have some additional information about it. For example, अगर question ऐसे आया कि there are two numbers and when we add two numbers the value is 8. Okay, that means if I assume one number to be x, other number to be y, okay, so the addition of both the numbers is 8. This is given in the question. Now from this equation can I calculate the value of both x and y? The answer is no, because ऐसे कितने सारे numbers हैं जिनका addition 8 आता है. For example 0 and 8, 1 and 7, 2 and 6, 3 and 5, correct? 4 and 4, then 5 and 8, 5 and 3. okay, so इसके अलावा नेगेटिव नंबर्स भी अगर मैं अज्यूम करता हूं तो -1 and 9, -2 and 10. तो देर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बेसिकली, ठीक है, जिनका एडिशन 8 आ सकता है दो नंबर्स का. सो इसीलिए दिस इंफॉर्मेशन इटसेल्फ इज नॉट इनफ फॉर मी टू सॉल्व दिस इक्वेशन. आई नीड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन. सम एडिशनल इंफॉर्मेशन वो भी इस फॉर्म में चाहिए फ्रॉम विच आई कैन फॉर्म अनदर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स. ठीक है, तो अगर मैंने इसके साथ साथ ये बोला कि द सम ऑफ द टू वेरिएबल्स इज 8 एंड द डिफरेंस ऑफ द टू वेरिएबल्स, the bigger number minus the smaller number is 2. ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है. The sum of the two variables is 8, the difference is 2. So अभी अगर हम लोग फिर से देखें वो सारे नंबर्स 1 7 2 6 3 5 4 4, ओके, देन 5 3, तो अभी सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी, एक ही पॉसिबिलिटी दिख रहा है मुझे. वन नंबर इज 3, वन नंबर इज 5. क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस 2 है और एडिशन इज 8. ओके, सो दिस इज द correct solution for my linear equations. So इसीलिए we need always two equations when there are two variables to solve the value of x and y. Now there are some methods to solve linear equations, different types of method. In this video we are only going to talk about the substitution method. Okay, there is one more method called elimination method. There are some more methods which you are going to probably study in your higher standards, but today we are only going to talk about the substitution method. Okay, let us assume a pair of equations, say x plus y equal to 4, 2x minus 5y equal to 1. ठीक है, मुझे इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन चाहिए. यहां पे आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. नाउ इस मेथड में हम लोग करते क्या है, एज द नेम सजेस्ट, वी जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एंड सॉल्व द क्वेश्चन. कैसे? वी यूज वन इक्वेशंस. फर्स्ट इक्वेशन वी यूज, ठीक है, उस इक्वेशन को अगर मैं यहां पे लिख दूं पहले, यू कैन सी हियर x plus y equal to 4 we know. So what we are going to do is we are going to find the value of x in terms of y. तो y अगर उस साइड चला गया तो x will be equal to 4 minus y. Correct? x will be equal to 4 minus y. Now in substitution method we are just going to substitute this value of x in the second equation and solve the problem. ठीक है, so substitute x equal to 4 minus y in equation number 2. Correct? So second equation is 2x minus 5y equal to 1. Here instead of x now I am going to write 4 minus y. Okay, उससे क्या होगा? See here. So 2 times, instead of x I will write 4 minus y. 4 minus y minus 5y equal to 1. This was the equation. Now in this entire equation the only thing that is not known is the value of y, and we can find that out by just using the things we learned about linear equations with one variable. So let us do that. If I open this bracket, multiplication होगा 2 4s are 8 minus 2 into y will be 2y minus 5y equal to 1. So 8 minus 7y equal to 1. Okay, that means what? 7y I am going to shift on that side, 1 on this side, 8 1 इस साइड -1 हो जाएगा, 7y उस साइड
पॉजिटिव हो जाएगा, -7y था +7y हो गया. So 7 equals to 7y. That means y will be equal to 7 divided by 7, that is 1. Okay, एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया मुझे, y equal to 1. So this is y equal to 1. अभी मैं x कैसे फाइंड आउट करूंगा? Once I have the value of y, x का वैल्यू तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है 4 minus y. So यहां पे बस मुझे y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है and I'll get the value of x. So all you have to do is, now x का वैल्यू क्या था? 4 minus y. Okay, so substitute y equal to 1. So यहां पे क्या आएगा? x will be equal to 4 minus 1, that is 3. Okay, so मुझे x और y दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू मिल गया by just substituting in each other. ठीक है, एक पहला इक्वेशन यूज करके उसका वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, we got the value of y. Substitute it again in the value of x and we get the value of x. ठीक है, तो x और y का वैल्यू है 3 and 1. This is the substitution method of solving linear equations in two variables. Now there are some more methods, but we can learn them later. Now we'll end the session here. Thank you.